तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Jai Gurudev, Girish Verma ji, Bhuvnesh Sharma ji, and all friends and lovers of Gita. Today, our MC is going to be Meena. She is a long-term governor, and she had worked on many of Maharishi's products, and I'm happy to have her as our Master of Ceremonies today. And she taught many people also. And now we will begin our program. Meena, go ahead, please. Hey, Gurudev. Thank you so much, Hemaji, Girishji, and Bhuvneshji. Thank you, everyone, for joining on this very auspicious day of Bhagwan Shri Krishna's Gita Jayanti. On this light-filled day of Gyan, Vigyan, and Brahma Vidya, we warmly offer our Swagatam and Namaskaras to everyone. We offer all our gratitude to Param Pujya Maharishi Mahesh Yogi Ji for giving us the highest level of knowledge and the practical application of this knowledge through an easy, simple technique of experiencing our own Atma through Bhavati Dhyanam, the transcendental meditation program. This highest and precious wisdom Maharishi Ji has unfolded in his very unique gift through his commentary on Srimad Bhagavad Gita. Maharishi Ji's commentary begins with the words, Bhagavad Gita is the light of life, lit by Bhagwan Shri Krishna at the altar of man to save humanity from darkness of ignorance and suffering. And Maharishi Ji also states, Srimad Bhagavad Gita is the scripture of yoga, the scripture of divine union with Paramatma. Maharishi states that the Bhagavad Gita brings fulfillment to the life of the individual. When society accepts it, social well-being and security will result. And when the world hears it, world peace will be permanent. So with that introduction, I would now like to give a brief outline of our program for this session. We are honored to have great speakers today. Shri Dr. Bhuvnesh Sharma Ji will provide the significance and importance of Bhagavad Gita Jayanti. Srimati Dr. Hema Devi Reddy Ji will describe the importance of Samskrita Vedic recitation. And special remarks will be provided by Martand Brahmachari Shri Dr. Girish Verma Ji. We will have recitations from various chapters by the beautiful and special students of Maharishi schools, followed by Aarti. And so with that, let us please begin with opening remarks by Brahmachari Shri Girish Verma Ji. Thank you. Jai Gurudev. So you're on mute, Girish Ji. Thank you. Sachin, start YouTube, please. Yeah. Am I audible now? Yes. Okay. I was just thanking Meena ji for inviting me to speak. Actually, I may not speak long. My throat is on part-time leave for last 2 days. I was traveling around for about 15 days, very hectic, and got little infection, usual. So it's really a great day, and we always celebrate every year. And the best thing we got from Maharishi Ji, the guidelines
the description, the interpretation, whatever we want to call, about Bhagavad Gita. Actually, the program going on Gurudev's 150th birth anniversary, which was actually yesterday, at the ashram of Jagadguru Shankaracharya Swami Vasudevanand Saraswati Ji Maharaj at Prayagraj. I was there 2 times to organize the whole program, and I had to come back here for something. And these days I'm listening Srimad Bhagavad every day, 4 hours. That also gives a lot of connection. It's a Gita connection, it's a life connection, it's the, as Minaji just said, Mashi said, Gita is the light of life. There's no doubt in that. It's absolutely. This morning, 2 Vedic Pandits came and they chanted whole Gita. Took about 2 hours comfortably. Afternoon, I heard the Katha. This Jitendra Nath Swamiji is doing very well, actually. Not jokes and not unnecessary singing, but really what we call to the Tattva Gyan, is sticking to that. So it's a joy that everywhere in the country, in all our institutions and 153 schools and Vidyapeeths, this Gita celebration was done yesterday some places, and today, being Sunday today, they had to celebrate a day before. Actually, if we see, it was also Ekadashi yesterday and it was Ekadashi today also. So both days are good for this. It's called Mokshada Ekadashi. And of course, we know Gita, it is for getting enlightened and getting nirvana. Speaking about the importance, या हम अगर हिंदी में बोलना चाहें तो गीता का महात्म की बात अपने जब करते हैं तो बहुत सारे पुराणों में जो गीता के बाद के लिखे गए होंगे, गीता काल के कहना चाहिए, या बहुत सारे लिटरेचर्स में गीता के महात्म की बात की गई है. अपने गीता में इटसेल्फ जो शुरू में कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रता. तो गीता जो है उसको कहा गया कि ये एक तरह का ड्यूटी है, कर्तव्य है इसको धारण करना. तो जैसा हमने शायद पहले कभी कहा था कि बहुत सारे घरों में परंपरा है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबको सब पूरी गीता नहीं आती, तो या तो पंडित बुला करके या कोई विद्वान को बुलाकर, या घर के लोग अगर 2-4 श्लोक भी जानते हैं गीता के तो गीता पढ़ी जाती है. ऐसी एक अपने यहाँ परंपरा है. बहुत सारे घरों की परंपरा है कि कोई भी त्योहार होगा, कोई भी संस्कार होगा, उसमें भी गीता के श्लोक पढ़े जाते हैं. अपने एक परंपरा है, एक मान्यता है कि घर में जहाँ अपने रहते हैं, सोते हैं, पूजा का स्थान है, वहां पर गीता रखते हैं अपने. और ये माना जाता है कि जीवन के अंतिम समय में अगर गीता है, इवन रखी हुई है, पुस्तक के रूप में रखी हुई है, अपने हृदय में है, मन में है, अपनी वाणी में है, अपने मस्तिष्क में है, तो वो मोक्षदायक है वो गीता. अभी शंकराचार्य महाराज जी से भी बात हो रही थी कि कितना सत्य है, तो उन्होंने कहा ये 100% नहीं, जितना सोच सकते हो उतने प्रतिशत सत्य है कि गीता जो है वो मोक्षदायिनी. जैसा हमने कहा बहुत जगह इसका महात्म्य लिखा हुआ है, और ब्रह्म पुराण में भी जो है वो इसके बारे में बात की गई है, वाराह पुराण में बात की गई है. और इसमें कहा कि पृथ्वी ने पूछा विष्णु भगवान से कि प्रारब्ध कर्म जो है उसको देखते हुए, उसका पालन करते हुए जो है वो भगवान में भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है.
तो भगवान ने गीता की बात की, उन्होंने कहा प्रारब्धम भुज्यमानो ही गीताभ्यास रतः सदा समुक्त है सा सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। उन्होंने आगे बताया भगवान ने कि जितना मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत सात्विक तरह से, इस तरह से बिना किसी पाप कर्म को छुए हुए, बिना किसी डिस्टरबेंस के, अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें, उन्होंने कहा महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दल मंबुवत। जैसे कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, कमल रहता है जल में, वही उगता है कीचड़ में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कमल के ऊपर, पत्ते के ऊपर जो है वो पानी ठहरता नहीं। तो उसी तरह भगवान ने कहा कि जो मनुष्य गीता को धारण करता है, उसका ध्यान करता है, उसको किसी भी रूप में महापापादि पाप जो है वो कभी स्पर्श नहीं करते और वो मोक्ष का अधिकारी होता है। तो ये अपने लोगों को एक बहुत बड़ा ज्ञान महर्षि जी से मिल गया है। और एक समय था जब हम लोग प्रतिदिन प्रातः काल में जो है वो पूरी गीता पढ़ते थे। हो गए 20-25 वर्ष हो गए, अभी तो नहीं कर पाते हैं। अब तो शंख के विष्णु सहस्त्र नाम पे आ गया, लेकिन करना चाहेंगे कि फिर से पाठ करें। अब तो बहुत सारा कंठस्थ भी नहीं है, विस्मृति हो गई है, लेकिन करने लायक है। तो अपने जो ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जोड़ सकते हो इसमें, वो करना चाहिए। क्योंकि कोई आवश्यक नहीं कि कोई रोज जो है ना इसकी चैंटिंग करे। वो कहते हैं केवल एक अवधारणा हो कि गीता हमारे मन में मन में है और हमारे मस्तिष्क में है, हमारी चेतना में है, हमारी आत्मा में है, दैट इज गुड इनफ। ऑफ कोर्स ये मतलब नहीं है कि हम कभी चैंटिंग नहीं करें, कभी गीता की पुस्तक को नहीं देखें, ऐसा नहीं है। लेकिन मन में अगर है, उसके प्रति भाव है, तो भी बहुत काम अपना हो जाता है। तो ऐसा सोच के, ऐसा विचार करके, ये बहुत अच्छा है हेमा जी ने और मीना जी ने, सब लोग, आप लोग मिलके किए हैं कि आज अपने सब, हमने तो सुबह भी सुन लिया, अभी भी सुनेंगे पूरा, और उसकी जो अवधारणा है मन में वो रखेंगे। और अपने लोगों की तो एक मात्र कामना है, मोक्ष की कामना है। सब कार्य महर्षि के जितने हैं अपने जीवन में मिले हुए हैं वो करते चलें, और फिर उसके बाद जब छुट्टी पाए, बहुत लंबी सी छुट्टी पाए, दोबारा उसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े, ऐसी छुट्टी पाए। और ये पूर्ण रूप से भगवान ने तो गारंटी की है गीता में, तो अपने जो है उस गारंटी का लाभ उठाएंगे और इसको पढ़ते चलेंगे, मन में रखते चलेंगे। So thank you very much again for inviting. And again, you said not to say sorry, but I'm saying sorry that due to the throat, I'm restricting to only a few minutes. And when it's okay, then we'll talk long and enjoy long. So thank you very much, everyone. Jai Gurudev, Jai Maharishi, Jai Shri Krishna Ji. Jai Gurudev, Jai Maharishi Ji, Jai Shri Krishna. Thank you very much, Brahmachari Girish Ji, for this beautiful, beautiful discourse. Very, very enlightening. We really appreciate you taking the time out for all of us to give the knowledge, share the knowledge that you have so beautifully received directly from Maharishi Ji. So we are very, very grateful for your presence today. And so now we will begin with the significance of Bhagavad Gita Jayanti. And for this, Dr. Bhuvnesh Sharma Ji, Vice Chancellor of Maharishi Vedic University, will give us some points on this. So please go ahead, Dr. Bhuvnesh Ji. Jai Gurudev. नारायण समारंभा श्री शुकाचार्य मध्यमाम शंकराचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। या कुंदिंदु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावता, या वीणा वर्धन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता। सामं पातु सरस्वती भगवती
Nishesha Jadyakaha. Jai Gurudev to everyone, all those who are joined through YouTube and also our Ramraj TV. And it is really very fortunate today because we are having this Mokshda Ekadashi. And everyone, all those who are joined, fortunately, they are already reciting and listening to recitation of Srimad Bhagavad Gita from last few weeks. So they already know the importance, they realize the importance of Srimad Bhagavad Gita. But today we are talking of special significance to Gita Jayanti. When we say Jayanti, it is like the birth of the Bhagavad Gita. Means Bhagwan Krishna was singing the song of the universal life. So this is the birth of the Gita. And when we say birth of the Gita, the most important thing is time and place. Whenever there is some new event, two things are very important, the time and the place. We already have talked of that Dharma Kshetre, Kurukshetre, this Bhagavad Gita was given to by Bhagwan Krishna to Arjun. So the place is there. And when we talk of time, we are going by Vedic calendar. All these Indian festivals, Vedic festivals, they are performed by the Vedic calendar. And when we say Vedic calendar, this goes by the sun and the moon, the position of sun in some sign, and with respect to this, the position of moon. So rest of the planets, they don't mind that much. Even though when we are taking a sankalpa, we are saying that this planet is in this sign, this planet is this sign. But when we are talking of the Vedic calendar, we are taking the position of sun and the position of moon, because sun represents the self and moon represents the mind. So I was thinking, everywhere we are talking of the importance of tithis, and especially the Mokshda Ekadashi or different Ekadashis are there. So there must be some basic scientific background on which we are talking of this Mokshda Ekadashi. So I thought and found that sun is in Vrishchik, and this is for the first time I am mentioning this because this thought came only yesterday, that sun is in Vrishchik Rashi. And when we make a chart of Vrishchik Rashi, Vrishchik Lagna, sun is in the ascendant. Sun is the self. Okay. And ninth house, those who don't know Jyotish, still I will be explaining how it is. That's moon, the ninth house is the house of the Prarabdha. Because just now Brahmachariji was mentioning that through knowledge, we can say the whole karma is finished. Jnanagni dagdha karmani. The fire of the knowledge burns the karma. So ninth house represents the Prarabdha. And the fifth house represents the knowledge. So when we make this chart, we find that the Lord of ninth house is moon. And where it is placed? On Ekadashi, on Mokshda Ekadashi, the Lord of the house of Prarabdha or ninth house is placed in the fifth. Fifth is the house of knowledge, of education. So when we have knowledge, the Prarabdha can be finished. Like every season is there, we sow a seed in a proper season. So similarly, this knowledge comes at such a time when with knowledge we can burn out the karma. And then I was also finding that there is a story. Now we come to how the stories are related with the knowledge. That they say that for Mokshda Ekadashi, there was a king, Bekhanas was the name of the king, and he had a dream. And the dream was that his father is in hell. Because of some, we will not go into those details because the time may not permit. But basic idea was that his father was in hell, in Narak. And then he was told by rishis that if you have this recitation of Bhagavad Gita and all this Mokshda Ekadashi, because this Ekadashi is especially for giving enlightenment, so your father will also come out of hell, will be enlightened, and you will also get the advantage. So we see that 10th house is the house of father. And the house of father in this case is sun. Because when we say Vrishchik Lagna, the Lord of 10th house is sun. Sun represents the father also. And 10th house is also the father house
house of the Father. So Mokshda Ekadashi it is related with the knowledge, and Bhagwan Krishna was singing this Bhagavad Gita to enlighten everyone. So that is how all these stories, they have to be related in terms of consciousness, and from whatever angle. One can see from angle of Jyotish, or one can see from angle of literature. From any angle we see, this is very auspicious that we have this. And what happens if we are planting a seed in proper season, then it will sprout. So this is the time when we listen to the recitation of Bhagavad Gita, we will be having extra advantage, because otherwise every day we can listen to recitation and it will be beneficial, because being the Vedic knowledge. But on this day especially, because this is Mokshda Ekadashi, and moksha, when we talk of moksha, actually not just the moksha like that after death you will be in moksha. No, living life in enlightenment, that will be living life and getting advantage of Mokshda Ekadashi. So this is just a brief, I will say, the importance. The importance is infinite, being Vedic celebration, but we are just mentioning in few words that this is very auspicious today, and everyone realizes the importance of Bhagavad Gita, and we will be listening how because the Sanskrit is the Vedic language, the Devanagari. Like if we go to France, we have to speak in French. If we go to any country, we have to speak the language of that country. So Devatas, they understand the language of Devanagari, they understand. And so if we want to really be at that level and get advantage of all the Devatas, the best is to recite it in the Sanskrit language and listen it in the Sanskrit language. I think I will just say these few words, and because listening to recitation is much more important than having this discussion. So I thank you everyone, especially Brahmachari Girish ji, Dr. Hemaji, Meenaji, and everyone, all those who are connected. And very good, we can say all the best wishes for Mokshda Ekadashi. Jai Gurudev, Jai Maharishi, Jai Shri Krishna. Jai Gurudev. Thank you so much, Dr. Bhuvneshji. What beautiful exposition. You took the angle of Vedic literature, Vedic science, from the angle of Jyotish. And, Maharishi has said, he uses the words roasting of all the seeds of karma, prarabdha karma. And this actually gives us that first step of enlightenment into cosmic consciousness. So beautifully explained, Dr. Bhuvneshji. Thank you so much. Jai Gurudev. And so we'll move forward to our next item, which is we'd like to hear from Dr. Hema Reddy ji. She's the Mother Divine on Mother Divine program in USA. And she will talk about the value of Samskrita Vedic recitations. So this is an important part as well of our session today. So please go ahead, Dr. Hema ji. Jai Gurudev. So you'll have to unmute, please. I am unmuted. Can you hear me now? Yes, now we hear you. Yeah. Okay. Okay. Jai Gurudev to all. Today is a happy day for us. We are going to listen to our students reciting Bhagavad Gita. When Maharishi ji wrote commentary on Gita, he said, when people hear Gita, there will be world peace. He also said that Bharatiyas love Gita. Even if we don't understand it, we like it. And Maharishi explained that every Samskrita word is lively on all levels, surface level to transcendental level. Every Vedic word is the expression of totality. What does totality mean? Totality means Brahman. It is derived from the root Brihat, means big. The synonyms for Brahman are Paramatma, Purushottama, God,
and physicists call it unified field. But they all mean the same thing. In common language, we say Paramatma, or in English, we say God. Sometimes Maharishi uses the word wholeness for totality. So this totality, this wholeness, which in Sanskrita we say Purnatva, Purna, it is available in one Sanskrita letter, that is A. So every Sanskrita letter is an expression of Paramatma. That's where the value of reciting Vedic recitation in Sanskrita comes from. Every sound has some A in it. For example, when you say ka, kha, ga, gha, cha, cha, ja, jha, etc. When you say ka, it is ka plus A. That makes it ka. So all these Vedic sounds are reverberations of Atma. Whatever we say is the flow of Atma. And we are experiencing the silence of Atma when we transcend. Then we say, Vedaham, I am Veda. Vedoham, I know Veda. And in this unmanifest field, there are fluctuations, there are vibrations. And all the memories are there, smriti. And then, when memories wake up, they're heard. Their activity is heard. So it becomes Shruti. Shruti means that which is heard. Shruti is the Veda and Vedic sounds. So now you see the connection. Speaking Sanskrita and the recitation of the Vedic sounds means we are stirring up in our own awareness some feature, some quality of totality of Brahman. This is Vedic culture. No matter what you do, you are stirring up totality. So I'll stop here because we have quite a long program. And Jai Gurudev, Meena, continue please. Jai Gurudev. Thank you very much, Dr. Hemaji, for this beautiful exposition. You gave an introduction to Maharishi's great contribution as an avatar, his Aparushaya Bhashya, where he unfolded and gave the importance of the sequence of the syllables of Rig Veda, starting from that single syllable A, and as Dr. Hemaji explained, the totality and its flow into its point value. So with that, we will go ahead and begin with our recitations of Bhagavad Gita, and we will start with Gita Dhyanam. And Meenakshi ji, please go ahead and do the Gita Dhyanam, and thereafter we will start with the recitations of the chapters. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Om Parthaya Pradibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gradhitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitaamritavarshini Bhagavatim Ashtadashadhyayini Amba Tvam Anusandadami Bhagavad Gite Bhavadveshini Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha
स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। जय गुरुदेव। Jai Gurudev. Thank you so much, Meenakshi ji. And now we will listen to our precious students reciting the Bhagavad Gita, and Ravendra ji will play the videos of the following chapters, one after the other, from chapter 1, chapter 4, chapter 9, 12, chapter 15 as well. Jai Gurudev. Just a moment. Ravinji's sound is not coming somehow. Now sound is coming. No sound. Now No sound yet. Maybe in your computer you have to open from somewhere. जी वो शेयर साउंड्स क्लिक कर लीजिएगा. Sachin, say again, it was not audible properly, what you said. रविंद्र जी शेयर स्क्रीन के साथ में एक शेयर साउंड का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कर लीजिएगा. it's open with all screen, no? Yes. जहाँ पे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आता है ना, उसी के साथ में एक शेयर साउंड भी ऑप्शन आता है.
ये स्टॉप शेयरिंग कर Yeah, लीजिएगा I screen already को। click it. Share sound. शेयरिंग स्क्रीन को स्टॉप कर लीजिएगा, उसमें शेयरिंग स्क्रीन के साथ में एक ऑप्शन आता है शेयर साउंड। I'll restart again. हाँ, hello. No sound yet. That's technical difficulty. Now audible? Yes, now it is coming. Shri Paramatmani Namaha. Shrimad Bhagavad Gita. Atha Prathamodhyayah. Arjuna Vishad Yoga. Dhritarashtra Uvacha. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैन्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्ध्यार्थं तान्ब्रवीमि ते भवान्
कृपश्च सुविदिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योचैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च वीर्यश्च प्रणवानः गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मुलोऽभवन् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खम् भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमूलो व्यनुनादयन् अथ स्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं निगमाह महीपते सोनयोरुभयोर्मध्ये रथस्थापयमेच्युत आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पुत्रः सार्याः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हतो किं नु मही कृते यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् केन मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानान् वक्ष्येऽहं य एते
समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे रयुद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवम् उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मनीषिता उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा स्वसुरान् सहृदश्चैवम् सेनयोरुभयोरपि तान् संवीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धू अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत् दृष्टमेव स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुष्य शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते काटीवं संसते हस्तान् त्वच्चैव परिगय्यते न चोशक्नोमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनं महवे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तत्त्वा धनानि च हत्यधार्तराष्ट्रानः का प्रीति स्यात् जनार्दनः पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वेतानार्ततायिनः तस्मान्नार्हवयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् सञ्जय न हि कथं हत्वा सुखिनः स्वमाधव यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभपावनचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्हि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिवतान् कृष्ण प्रत्युष्यन्ति कुलस्त्रियम् स्त्रीषु दृष्ट्वा सुभाषेय जायते वर्णशङ्करः
शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्याशां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः उत्सर्कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बद्महताहं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मामप्रीतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राण्यणे हन्युः तन्मे शिवतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्य उपाविशत् विसृज्य ससरं चापम् शोकसंविग्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् धन्यवाद ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनविप्राः मनुरिक्ष्वाकविर्ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजस्य यो विदुः सकाले नेह महता योगो नश्च परन्तप स एवायं मया वेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं वेदमुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तद्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा बोधा पद्मागमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताः सदैव भजाम्यहम् मम पद्मानुपद्यन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः
क्षिप्रं विमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि विमुक्तुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षये शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् कर्मणा कर्मणो गतिः कर्मण्यः कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमानमस्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानकृत्कृतकर्माणम् तमाहिमन्दितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यः विप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्य सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत्तुच्छालाभसन्तुष्टो त्वन्त्वादीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते कथसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाचारतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैरर्धेन तद्द्रव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञैर्नवोपजूहते श्रोत्रादीनीन्द्रियाणन्ये संज्ञाग्निषु जुहति सप्तादीन् विषयाणन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि सावरे आत्मसंयमयोगग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञसतोपज्ञा योगज्ञाय सतापरे स्वात्ययज्ञानचज्ञस्य यदय संसिद्वत्तः कपाले जुहति प्राणम् प्राणे पानं तदा परे प्राणाय कृत्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहाराः प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञशविदकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतपूजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यकुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मजा वित्तितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् च तत्र वमायत्य ज्ञानज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पाद ज्ञाने परिसमाप्यते तद्वित्ति प्राणिनः प्राणे परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति चेदानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञाद्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पादः येन भूतान्यशेषेण
प्रशस्यात्मन्यतो मयि अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं व्यापनकृत्वेव वृजिनं सन्दरिष्यसि यदैतांसि संवितोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तदा न हि ज्ञानेन सदृशम् अविद्यमिह विद्यते तस्मयं योगसंसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति तच्च वाङ्मपते ज्ञानम् अपरः संयतेन्द्रियः ज्ञानं दत्त्वा परं शान्तिम् आसीनेनात्ति गच्छति अग्नश्च छात्रदानस्य संशयात्मा निगच्छति नायं लोकोऽस्ति न परो नासिकं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंसिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति न तञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्त्वैवनं समं संशयम् योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ सत्सदिति इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोग नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं कृते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं
श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं चतुरहं यज्ञः सदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाच्यम् अहमग्निरहं मृदम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वैद्यं पवित्रमोङ्कारः उत्साहयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानम् निदानं बीजमव्ययम् तमाः तपाम्यहमहं दर्शम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यावां सोमपाः भूतपापाः यज्ञैरिष्मा स्वगतिं पातयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यानि देवभोगान् तदेकं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मध्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यनधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जानन्ति तत्त्वेनादर्श्य वर्धिते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति विदुव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः प्रकृतिं यान्ति मद्याजिनोति मां पत्रं पुष्पं फलं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युसमर्पयामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेव मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यवान् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मः शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां विपातव्यपाश्रित्य एति स्युस्पापयोनयः श्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा ते यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणं पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैनं आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। जय गुरुदेव।
यामि तथाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्पूर्णः समर्थ्येषु सर्वा
भैया जी आर यू हाँ सेइंग रविंद्र जी, आइडिया ये था हेमा जी का और वहां से कि जी। इसमें डिस्टरबेंस बहुत है, तो इसको डिसकंटिन्यू करके लाइव Yes. वहां पे जो कनेक्टेड है वो चैंट करेंगे। तो इसको बंद कर दीजिए, शेयरिंग बंद कर दीजिए। Sure. Meena ji, you may please invite whoever is going to chant. Yes, Girishji, do you want the same children who were doing chapter 9 right now? Do you want them to start? No, I think sorry, this they was were chapter 10. 10, chapter 10, Yeah. sorry about that. Yes, please. So from Hyderabad, the children could please, Hyderabad. Children, please continue with chapter 10. This was actually Hyderabad. They were chanting 10 and Hemaji thought there's a lot of disturbance, so we stop it and we do live chanting. She mentioned the name. Sorry, I forget the name. Hemaji, could you please say which name you mentioned? We only have video recordings. We don't have anybody live today. Okay. So because of the disturbance, it's not good to listen to Vedic chanting with that kind of background disturbance. Right. So that's why I thought we will stop the program now with the recordings. Because we started with the first chapter. I have a Madhavi from Hyderabad MVM. She will recite a few shlokas from 18th chapter. That way we will be completing Gita Parayana, and then you can make concluding remarks, and then we can stop, and we can continue with the other recordings at another time. Good. So is Madhvi ji connected? Yes. Okay, then she could continue. Yeah, please. Madhavi, go ahead with 18th chapter, please. And then we will have Gita Arti by Jayashree, and then Shanti Path, and then close. Jai Gurudev, I'm just getting connected through the system. Just a second. Jai Gurudev. Harihi Om. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। श्रीभगवान् उवाच मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषमे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यम्
मद्भक्ते ह्यभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्येते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रासादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयस्त स्वयम् राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। जय गुरुदेव। अथ गीता माहात्म्यम् धरोवाच
भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं बुध्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रम् यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनम् गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। भारती। जय जय भगवद्गीते माते जय भगवद्गीते हरिः कमल विहारिणि हरिः कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते जय जय भगवद्गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मात कामासक्ति हरा तत्वज्ञान विकाशिनी तत्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा जय जय भगवद्गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी माता निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी
रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी जय जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मातकारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशी नाशिनी तमरजनी मात नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी जय जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी माता हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय माता मातु कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपना कर लीजिए जय जय भगवद गीते जय भगवद गीते माते जय भगवद गीते हरि हिय कमल विहारिणी हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते जय जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते Jai Gurudev, Jai Maharishi Ji, Jai Bhagwan Shri Krishna. Meena, I would like to say something. Yes. I'm sorry that we had to cut short our program because of technical challenges. We had many more beautiful recordings from students of Bhagavad Gita recitation that we couldn't play. And we will work out a program so that we will air them at a later date. I would like to thank Brahmachari Girish Verma ji and Dr. Sharma ji for giving me this opportunity to arrange this program. And I want to thank all the students who recited Bhagavad Gita so beautifully. And I can see all the time and effort put into this by the students, teachers, and parents. And then on an ongoing basis, they're, learning and, reciting like this. It's very beautiful. It's a really great accomplishment to be able to recite Bhagavad Gita. And I hope that many more students will participate in future. So with this, I think we should close now because we have exceeded the time. Girish Verma ji, or
Bhuvnesh Sharma ji, do you have anything to announce or anything to say? Otherwise, we can close. Shanti mantra Hemaji. It's Shanti Path, yeah. Sahana bhavatu Sahano bhunaktu Sah viryam karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Shanti 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 Jai Gurudev. Jai Gurudev. Meena, do you have anything to say? Otherwise, we can conclude the meeting. We will meet next Sunday, 7:30 evening, India time, and we will continue with our Gita Satsang. Jai Gurudev. Yes, Hemaji, we congratulate all the children for the time they took to practice and perfect their recitations, and we send you all our best wishes for all success in your studies and growth to higher states of consciousness. So as Hemaji said, we will set up another program soon. So we look forward to seeing you all. So Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. All may come on videos now and let us say Jai Gurudev. Thank you, Harshida, for beautiful aarti. It looks very beautiful. Thank you. And thank you all, Jayashri, Madhavi, Meenakshi, for reciting. That's very beautiful. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev.